I am audible to you. I am audible to you. I hope 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 I am audible to you. Everybody please come live. I hope I am audible to you. Everybody please come live. I hope I am audible to you. Everybody please come live. I hope I am audible to you. 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 I hope I am audible to you clearly. I hope I am audible to you clearly. Please write yes in the comment box if I am audible. Please write yes in the comment box if I am audible to you clearly. I hope I am audible to you clearly. Please everybody come in fast. Okay, everybody please inform in the group also so that they can join. So yesterday's session, in the previous session we have seen drug distribution. So in that we have seen the what do you mean by drug distribution? What do you mean by drug distribution? What are the factors affecting on the absorption? We have seen the first pass effect. We have seen the biopharmaceutical classification of drugs, and we were started with this drug distribution also. So that we have seen different barriers for distribution. Different barriers for distribution, volume of distribution we have seen. I have also explained you teratogenicity. Teratogenicity I have also explained, right? So today we'll see the remaining part. We have seen this part also, relative volume of distribution, perfusion rate and blood flow, right? So from this I will start again. So we have seen in the previous part, this session, this slide we have seen in the previous part also, but again I would like to revise it to you, right? So relative distribution, okay, relative
Volume of different organs, blood flow and their perfusion rate under the basal condition. If a healthy adult is above 70 kg, so his volume of his fluid volume will be around 70 liter. So total body volume will be 70 liter, and relative volume of different organs as compared to your total body volume. टोटल बॉडी वॉल्यूम से हर एक ऑर्गन के लिए कितना वॉल्यूम है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट some are classified as a highly perfused organ, some are classified as a moderately perfused organ, and some are classified as a poorly perfused organ. मतलब सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो किसको जाता है, सबसे ज्यादा कार्डियक आउटपुट किसको जाता है ना, सबसे कम कार्डियक आउटपुट किसको जाता है. Some are known as highly perfused organs. So like for example lungs, you have to remember lungs, kidney, adrenal glands, liver, heart and your brain. So brain, kidney, liver, adrenal glands, heart, they are nothing but the highly perfused organ. And do you know who is the highest perfused organ? तो याद रखना है lungs. Lungs are nothing but the highest perfused organ. Lungs are nothing but the highest perfused organ. तो lungs क्या है, सबसे ज्यादा perfused organ है. Lungs are the highest perfused organ. Remember, lungs are the highest perfused organ. You have to remember. एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है, क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है, क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है, राइट. So lungs are nothing but the highest perfused organ. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो अराउंड 500 ml per minute blood flow is there for the lungs. lungs को सबसे ज्यादा blood flow होता है and 100% cardiac output goes to the lungs. After that kidney, adrenal gland, liver, brain, and remember muscle and skin, they are known as a moderately perfused organ. And adipose tissue and bones, they are known as a poorly perfused organ. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है one of the following is a highly perfused organ, है ना, which organ is a poorly perfused organ. तो ये ऑलरेडी अपन ने देखा है, बट जस्ट ए वाइज. ओके, देन रिमेंबर फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ 70 kg अडल्ट. एक 70 kg अडल्ट है, उसमें कितने कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड है. फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ 70 kg अडल्ट, एक 70 किलो के सांड में, है ना, 70 किलो के सांड में कितने फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं, राइट. सो मोस्टली यू हैव these three compartments. First one is known as a vesicular compartment और vascular compartment. Vascular compartment मतलब क्या, vascular मतलब blood vessel. तो blood vessel के अंदर क्या होता है, blood, right. Vascular compartment, you have 6 liters of blood in your body, 6 liters of blood, which is a 9% of your total body weight. आपका जो बॉडी वेट है उसके 9% क्या है, ब्लड है. एंड टोटल बॉडी वाटर कितने परसेंट है, तो टोटल बॉडी वाटर आप में अराउंड है ना 40 लीटर होता है टोटल बॉडी वाटर, राइट. सो परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर, सो इट इज अ 15% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, राइट. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा. प्लीज शेयर, okay, please share this link with your, so everybody please come live fast. It is a very important session is going on. आपका ये सेशन important है, everybody join ना. तो important session है. So vascular fluid होता है 6 liter, plasma is there, 6 liter blood is there. So out of that extracellular fluid होता है 12 liter, extracellular fluid is 12 liter. Then percentage of body weight, total body weight के 17% होता है आपका extracellular fluid, and total body water के 28% होता है आपका extracellular fluid.
राइट। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मींस इनसाइड एंड सेलुलर मतलब सेल, सेल के अंदर का फ्लूइड कितना होता है, तो इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज अराउंड 24 लीटर्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज अराउंड 24 लीटर्स, और इसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड 24 लीटर्स, दिस इज ऑलरेडी आस्किंग जीपैट, क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स, है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स, so it is a 24 liter and which is a 34% of your total body weight and 57% of your total body volume. So total body water कितना होता है आपका, total body water in a volume 42 liters and total body water in a percentage 60% of your body weight. तो आपका 60% बॉडी किससे बना है, वाटर से बना है, एंड 100% of your total body water, right? तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। आफ्टर दैट डिफरेंट मार्कर्स यूज्ड टू मेजर द रियल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट। तो आपके मार्कर्स यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स, तो आपकी जो फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स है उसका वॉल्यूम कितना है और वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे तो लिखा है टोटल बॉडी वॉल्यूम 42 लीटर्स, बट ये कैसे मालूम होगा आपको, हाउ यू कैन नो, तो इट यू हैव टू एसेस दैट, आपको मेजर करना पड़ता है, यू हैव टू मेजर, एंड फॉर दैट तो डिफरेंट कंपाउंड्स दे आर यूज्ड एज अ मार्कर्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मार्कर्स यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखो यू हैव प्लाज्मा मीन्स वेस्कुलर फ्लूइड, सो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड कंपार्टमेंट प्लाज्मा मार्कर यूज्ड एंड अप्रोक्सीमेट इट्स वॉल्यूम। तो प्लाज्मा के लिए आपको कौन सा मार्कर यूज करना है, क्वेश्चन आता है आपको व्हाट मार्कर इज और वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू मेजर द प्लाज्मा, राइट। सो रिमेंबर इवांस ब्लू, देन इंडोसायामिन ग्रीन, आयोडीन 131 एंड अल्बुमिन। सो अल्बुमिन, आयोडीन 131, इंडोसायामिन ग्रीन, इवांस ब्लू, so all these compounds are the marker compounds for measurement of blood plasma ना, ब्लड का प्लाज्मा मेजर करने के लिए इवांस ब्लू, इंडोसायामिन ग्रीन, आयोडीन 131, अल्बुमिन। टोटल प्लाज्मा कितना होता है, इट इज अराउंड 3 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा इन योर ब्लड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आरबीसी, so volume of RBC, so to measure the volume of RBC you need a one marker that is known as the chromium 51. Chromium 51 is used to measure the erythrocytes or RBCs. So number of RBC, volume of RBC is measured by using this marker, कौन सा, chromium 51। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, chromium 51 is used as a marker for measurement of RBC volume। तो कितना होता है, अराउंड 2 लीटर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो टू मेजर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, to measure the extracellular fluid, a non-digestible saccharides like raffinose, कुछ नॉन डाइजेस्टिबल शुगर होते हैं, नॉन मेटाबोलाइजेबल शुगर्स होते हैं, नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकराइड्स लाइक रैफिनोज, इनुलिन, रैफिनोज, इनुलिन। इनुलिन क्या है, इस इनुलिन इज नथिंग बट द इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज होता है। इनुलिन, मैनिटॉल, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ सेलेक्टेड आयंस, है ना, like sodium chloride, bromide, sulfate। so to measure the extracellular volume measure करने के लिए non metabolizable saccharide like raffinose, inulin, mannitol, radioisotopes, okay, radioisotopes and radioisotopes of selected ions like sodium chloride, sodium chloride, bromide, bromine and sulfate. So they are used as a marker compound for measurement of extracellular fluid. And how much amount of extracellular fluid? So total 15 liter of extracellular fluid around, that is
प्रेजेंट इन बॉडी। तो टोटल बॉडी वाटर मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? मेजरमेंट ऑफ टोटल बॉडी वाटर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्चुअली दिस पार्ट इज फ्रॉम योर बायोफार्मास्यूटिक्स। ओके, ड्यूटेरिएटेड वाटर क्या है? ड्यूटेरिएटेड वाटर, D2O। D2O मतलब ड्यूटेरिएटेड वाटर। नॉर्मल वाटर जो होता है आपका H2O है ना, आपका H2O वाटर होता है ना। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। बट ड्यूटेरिएटेड वाटर मतलब क्या? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। नाउ इट इज नोन एज अ हेवी वाटर, ड्यूटेरिएटेड वाटर, हेवी वाटर, एंड ट्रिटिएटेड वाटर, एंड ट्रिटिएटेड वाटर। ट्रिटिएटेड वाटर मतलब क्या? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन जो है उसका आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स, हाइड्रोजन हैज अ 3 आइसोटोप्स। पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 लिखते हैं ना आप, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे 1। सो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। तो हाइड्रोजन 3, so hydrogen 1 is known as a hydrogen, hydrogen 2 is known as a deuterium। ये जो हाइड्रोजन 2 है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, हाइड्रोजन 3 को बोलते हैं अपन ट्रिटियम। सो हाइड्रोजन हैज अ 3 isotopes। सो ओके, सो नॉर्मल वाटर इज H2O एंड आइसोटोपिक वाटर मतलब ड्यूटेरिएटेड वाटर इज अ हेवी वाटर एंड ट्रिटिएटेड वाटर मतलब H3O। सो एंड एंटीपायरिन, तो ये क्या है? These are the marker compound, deuterated water, tritiated water and antiparin. They are marker compound to measure the total body water। कितना होता है total body water? 42 लीटर्स। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रिमेंबर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ 70 kg अडल्ट, कितना कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड है? कि वेस्कुलर फ्लूइड कितना है? 6 लीटर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है? 12 लीटर्स। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है? 24 लीटर। और टोटल कितना है? 42। तो क्वेश्चन आता है कि वेस्कुलर फ्लूइड मतलब ब्लड, ब्लड वेस्कुलर फ्लूइड कितना है? 6 लीटर। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है? 12 लीटर्स। देन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है? 24 लीटर्स। टोटल बॉडी फ्लूइड कितना है? 42 लीटर्स टोटल बॉडी वाटर, राइट, याद रखना है। देन यहाँ पे मार्कर कंपाउंड, ठीक है। सो विल सी द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नाउ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, very very important phenomena, plasma protein binding, the phenomenon or the property of formation of complex after the absorption depending upon the physicochemical properties of drug। ड्रग जब एब्सॉर्ब होता है उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्री रहेगा या फिर बाइंड करेगा प्लाज्मा प्रोटीन को। So some drugs depending upon their physicochemical properties after absorption they binds with the plasma proteins, and this property, this phenomenon of formation of complex with the plasma protein of a drug is known as a protein binding। तो जो फिनोमिनन होता है, जो एब्सॉर्प्शन के बाद में ड्रग आपके ब्लड में जाएगा, तो some drugs depending upon their physicochemical properties they binds with the plasma proteins, and the phenomenon of formation of complex, phenomenon of formation of a reversible complex with the protein, phenomenon of formation of drug protein reversible complex known as a plasma protein binding। ठीक है, plasma protein binding। ड्रग binds to different proteins, है ना। So है ना, now this protein, so drug mostly binds to intracellular receptor। ड्रग का जहां पे काम है at the site of action, so drug will bind to its receptor known as a intracellular binding। so intracellular binding is known as a primary receptor। तो ना ड्रग जहां पे जाके साइट ऑफ एक्शन पे वहां पे बाइंड करेगा। ड्रग will bind to a primary receptor known as a intracellular binding, and extracellular binding is known as a secondary receptor or silent receptor। टर्म है आपके।
एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग मतलब क्या, ये जो प्रोटीन बाइंडिंग है ये ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग है, वट एवर प्रोटीन बाइंडिंग इज देयर इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग. So after the absorption drug may bind to plasma protein and the formation of complex of a drug with the plasma protein depending upon the physicochemical properties of drug known as the plasma protein binding of drug. Primary receptor is known as the intracellular binding, secondary receptor is known as the extracellular binding. Now types of protein binding, कितने टाइप के प्रोटीन बाइंडिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ चुका है, राइट. टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. फर्स्ट होता है रिवर्सिबल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. So it is the most commonly drug will bind to a plasma protein in a reversible manner. So most common and general reversible. So drug can form a complex with the plasma protein in a reversible manner, which is the most common type of plasma protein binding. Now what are the types of bond present in the reversible type of plasma protein binding? तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड. So in the reversible type, hydrogen bond, then hydrophobic interactions, hydrogen bond, hydrophobic bond, then ionic interaction and van der Waals forces. So remember, in a reversible type of plasma protein binding, so what type of interaction is there, what type of bond formation is there? जहाँ पे रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है वहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं, या फिर आयनिक इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड होता है, या फिर वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं. तो हाउ ए ड्रग विल बाइंड टू ए प्लाज्मा प्रोटीन इन अ रिवर्सिबल मैनर. तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन द plasma protein binding, reversible type of plasma protein binding. So in the reversible type of plasma protein binding, hydrogen bonds, hydrophobic bonds, ionic bond or van der Waals forces, these are the different type of interaction. Okay, reversible type of plasma protein binding is the most common. Then second type होता है irreversible. So second type of plasma protein binding is irreversible, and this is a rare. Okay, rarely a drug will bind to plasma protein in a irreversible manner. So drug rarely binds to the plasma protein in a irreversible manner. Reversible क्या होता है, most common होता है. Irreversible क्या है, rare phenomena. Now in this case covalent bond is there. ये क्वेश्चन आ चुका है, covalent bond is there. So in case of reversible binding, hydrogen bond, hydrophobic bond, ionic bonds or van der Waals. But in case of irreversible protein binding, there is a covalent bond. Okay. So for example, covalent binding of chloroform or binding of paracetamol metabolite, that is NBQI, to the liver cell. Irreversible protein binding मतलब क्या है, irreversible binding of drug with the plasma protein or tissue protein. तो drug may bind to a plasma protein, drug may bind to a plasma protein और drug may bind to a tissue protein. हमने देखा है after the distribution drug may bind to plasma protein और drug may bind to tissue protein. है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल हैज अ लीवर टॉक्सिटी. पैरासिटामोल का एक मेटाबोलाइट होता है NBQI, है ना. पैरासिटामोल इज मेटाबोलाइज्ड एंड देयर इज वन जनरेशन ऑफ वन मेटाबोलाइट नोन एज NBQI. मतलब N-acetyl benzoquinone imine, N-acetyl para benzoquinone imine. तो एक मेटाबोलाइट होता है दैट विल बाइंड टू लीवर and it will bind to liver by irreversible manner. देखो है ना, so it is known as a irreversible type of plasma protein binding. तो irreversibly कौन बाइंड करता है, क्लोरोफॉर्म बाइंड करता है लीवर सेल को, NBQI पैरासिटामोल का मेटाबोलाइट बाइंड करता है लीवर को to cause the hepatic necrosis, right? So plasma protein binding there are two type, reversible, irreversible. Reversible में hydrogen bond, van der Waals forces, hydrophobic interaction and ionic bond.
इरिवर्सिबल में कोवैलेंट बॉन्ड, क्वेश्चन आ चुका है। नाउ ड्रग दोज which binds selectively, drug which selectively binds to the plasma protein, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करते हैं वो बाकी, those drug which binds to plasma protein selectively they will less bind to the extracellular tissue, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करते हैं वो बाकी टिश्यू को बाइंड नहीं करेंगे या कम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका है वारफेरिन, वारफेरिन इज अ anticoagulant drug which is a 99% plasma protein bound. Warfarin binds to plasma protein 99% and that's why it has a less apparent volume of distribution than true volume of distribution. Warfarin has a less apparent volume of distribution than true volume of distribution. Warfarin का apparent volume of distribution कम होता है true volume of distribution से। क्यों? Because drug is present in the blood only, because warfarin is 99% protein bound, and that raises the possibility for the drug interaction, drug distribution interaction. तो दूसरा कोई ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है उससे ज्यादा एफिनिटी है तो वो डिस्प्लेस कर देगा जिसको वारफेरिन को, है ना। देन याद रखना है, so those drug binds the selectively to the drug which binds to selectively to the plasma proteins will bind less to the tissue, and drug which binds selectively to the extravascular tissue, अगर कोई ड्रग एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू को बाइंड करता है वो लेस बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। So some drug binds to the tissues, some drugs binds to the tissue, and those drug which bind to the tissue protein, drug which binds to the extravascular tissue means tissue protein, they will less bind to the plasma and they will have higher apparent volume of distribution, they will have large or higher apparent volume of distribution than true volume of distribution. For example chloroquine, chloroquine क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल ड्रग chloroquine binds to the liver, binds to the retina, and that's why it is a higher volume of distribution. Chloroquine has a higher volume of distribution. So you can say 1600 लीटर, ये क्वेश्चन भी पूछा है GPAT 2022 में, what is the volume of distribution for chloroquine? So it is a 1600 liter, actually it is in range 1300 to 1600 लीटर। तो देखो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है वो बाकी एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू को बाइंड नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू को बाइंड करता है वो प्लाज्मा प्रोटीन को ड्रग बाइंड नहीं करेगा। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, जो ड्रग एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू को बाइंड करता है उसका ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? Am I audible to you? Are you getting my points? Now very important, very important IMP. This chart is very important. This chart is very important. So I will explain this chart. So in your body you have different plasma proteins. आपके बॉडी में different plasma proteins है. So different plasma proteins available for binding to a drugs. है ना? So or you can say different drug will bind to a different plasma proteins. So what are the different number of plasma proteins? कि बॉडी में कितने प्लाज्मा प्रोटीन्स है? So different plasma proteins available for binding of various drug. So various drug will bind to a plasma protein. So what are the different plasma proteins available in your blood? आपके ब्लड में कितने प्लाज्मा प्रोटीन्स है और उसको कौन से ड्रग बाइंड करेंगे? very important. So here I have listed the protein, their molecular weight, then concentration, gram percentages, so percentage gram concentration of protein and what type of drug binds. So examples of drug binds to them. This chart is a very important. I told you. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। So protein, molecular weight, then concentration in the blood and examples of drug binding to that particular plasma protein. तो पहला है देखो
human serum albumin. First plasma protein is a human serum albumin. What is the molecular weight? 65,000 Dalton. Molecular weight कितना है? 65,000 Dalton. Right? ये क्वेश्चन GPAT में आ चुका है. What is the molecular weight of albumin? GPAT 2021. Actually, it's in a range. 63 to 68. What is the molecular weight? 63,000 to 68,000 Dalton. GPAT 21 में ये क्वेश्चन पूछा था molecular weight of albumin and answer was given as a 65,000 Dalton because it's in a range actually 63 to 68,000 Dalton. Now human albumin, so it is present in a concentration 3.5 to 5%, है ना, human albumin. And remember, most of the drugs binds to the human albumin. Most of the drug binds to the human albumin, है ना. Most of the drugs binds to the human albumin, है ना. ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना. Mostly drug binds to which protein? So most of the drug binds to human albumin. Okay, molecular weight होता है 63 to 68,000 Dalton. Right? Now, what type of drug binds to the human albumin? Large variety of drugs and all type of drug binds to the albumin. And remember, mostly acidic drugs. Mostly acidic drug, है ना. जो acidic drug होते हैं, mostly acidic drug. Mostly acid drug. Acidic drug binds to human albumin. यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन कवर किए. I have covered 4 questions, okay, जो ऑलरेडी आ चुके हैं GPAT Niper ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट में. So what is the molecular weight of human albumin? So actually the molecular weight is in a range 63,000 to 68,000 Dalton. But in a GPAT 2021, the answer was given as a 65,000 Dalton. Okay. Most of the drug bind to human albumin. दूसरा क्वेश्चन आ चुका है. Right. What type of drug binds to that albumin? Mostly acidic type of drug. Mostly acid type of drug binds to albumin. But large variety of drug binds to albumin. Second plasma protein. Second plasma protein is nothing but the alpha 1 acid glycoprotein. Alpha 1 acid glycoprotein. These are the plasma proteins. आपके प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स है. तो सेकंड वन इज acid 1, है ना, alpha 1 acid glycoprotein. What is the molecular weight of acid glycoprotein? Alpha 1 acid glycoprotein, है ना, 44,000 Dalton. Okay, and it is present in the 0.04 to 0.01%, है ना. टोटल परसेंटेज कितना होता है इसका? ग्राम कितना. Now what type of drug binds to acid glycoprotein? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So here all basic type of drug. Basic drug binds to the alpha 1 acid glycoprotein. Basic कौन से? Like drug like इमेप्रामाइन, लिडोकेन, क्विनिडीन, है ना. जितने भी बेसिक ड्रग है वो ग्लाइकोप्रोटीन को बाइंड करेंगे. कौन से? एसिड 1 ग्लाइकोप्रोटीन. जितने भी एसिडिक ड्रग है वो सीरम अल्बुमिन को बाइंड करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट प्रोटीन आता है प्लाज्मा में, लिपोप्रोटीन्स. इन द प्लाज्मा यू हैव लिपोप्रोटीन्स. तो इन द लिपोप्रोटीन्स यू हैव डिफरेंट टाइप्स. लिपोप्रोटीन में क्या है? वैरायटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स आर देयर इन अ प्लाज्मा. तो लिपोप्रोटीन्स. व्हाट इज लिपोप्रोटीन? लिपोप्रोटीन मतलब क्या? देखो, लिपो मतलब लिपिड एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन. So it is a complex of lipid with the protein. Macromolecular complexes of lipid with the protein. Lipoprotein. So molecular weight ranging from 2 lakhs to 3.4 lakhs Dalton. और इसमें बहुत सारा होता है. इसमें HDL होता है. HDL है ना. HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको ही अपन बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना. देन LDL, दूसरा होता है LDL. LDL, है ना. HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल. बस के बाद में होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. और उसके बाद में होता है काइलोमेगा. तो लिपोप्रोटीन्स आर ऑफ 4 टाइप. HDL, LDL, VLDL एंड
काइलोमाइक्रॉन। तो कौन से टाइप के ड्रग बाइंड करेंगे यहाँ पे? तो अगेन बेसिक ड्रग्स, अगेन बेसिक लिपोफिलिक ड्रग बाइंड्स टू द लिपोप्रोटीन। जो बेसिक लिपोफिलिक ड्रग है वो लिपोप्रोटीन को बाइंड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरप्रोमेजिन। देन नेक्स्ट होता है अल्फा 1 ग्लोबुलिन। तो अल्बुमिन तो हो गया, ग्लोबुलिन। तो अल्फा 1 ग्लोबुलिन मॉलिक्यूलर वेट है इसका 59,000 डेल्टन, 0.003 टू 0.007% ग्राम होता है उसका। एंड रिमेंबर अल्फा 1 ग्लोबुलिन को बाइंड करते हैं स्टेरॉइड्स। So steroids like corticosteroids and some hormone like thyroxine, cyanocobalamin. So corticosteroids, thyroxine, cyanocobalamin, they will bind to the alpha 1 globulin after the absorption. इनका absorption होने के बाद में ये इसको बाइंड करेंगे। ये क्या है? प्रोटीन। It is one of the plasma protein. So that's why alpha 1 globulin is also known as a transcortin. है ना, आएगा आपको बाद में। तो alpha 1 globulin is also known as a transcortin because अल्फा 1 ग्लोबुलिन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंड करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अल्फा 2 ग्लोबुलिन, नेक्स्ट प्रोटीन अल्फा 2 ग्लोबुलिन, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 1,34,000 डेल्टन और 0.0152 टू 0.06 ग्राम परसेंटेज होता है इसका। नाउ दिस इज अ बाइंडिंग साइट फॉर लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स। जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के, एडीई के, so that will bind to the alpha 2 globulin after the absorption from blood. तो है ना, तो विटामिन ए, डी, ई के, they will bind to vitamin A, D, E, K will bind to alpha 2 globulin. And one more, remember cupric ion. Cupric ion will also bind to the alpha 2 globulin, and that's why it is known as a ceruloplasmin. है ना, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसकोटिन, इसको बोलते हैं सेरुलोप्लाज्मिन। देन हीमोग्लोबिन, जीपैट 23 पे ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, विच ड्रग विल नॉट बाइंड टू हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 64,500 टू 68,000। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 68,000। right? 68,000 डेल्टन। सो इट इज प्रेजेंट एज 11 टू 16 ग्राम परसेंट। मतलब नॉर्मल वैल्यू कितना होता है हीमोग्लोबिन का? 11 टू 16 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को फिनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, देन फिनोथाइजिन्स। So phenytoin, phenobarbital, phenothiazines, such kind of drugs binds to the hemoglobin. ठीक है, और ये क्वेश्चन एज इट इज आया था जीपैट 23 में। तो फॉलोइंग ड्रग विल नॉट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, है ना, फॉलोइंग ड्रग विल नॉट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। और ऑप्शन में भी थे फिनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, फिनोथाइजिन एंड क्लोरप्रोमाजिन। तो क्लोरप्रोमाजिन वाज द करेक्ट आंसर। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, बुक में भी ये चार्ट है। This chart is very important. The different human plasma proteins available for binding to a drugs, right? So I hope you have understood this. चलिए देख लेते हैं next. So remember, drug highly bound to the plasma protein. कौन से ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करते हैं? Drugs highly bound to the plasma protein, right? Remember, to the albumin. अल्बुमिन को बाइंड कौन करता है? टू द अल्बुमिन बेसिक टाइप ऑफ ड्रग बाइंड्स टू द अल्बुमिन, सॉरी, टू द अल्बुमिन एसिडिक ड्रग बाइंड्स। तो एसिडिक टाइप ऑफ ड्रग बाइंड्स टू द अल्बुमिन। कौन से ड्रग बाइंड करेंगे, है ना, एसिडिक ड्रग, फॉर एग्जांपल लाइक बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वैल्पोरिक एसिड, फिनिटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, सल्फाटोल, टेट्रासाइक्लिन, है ना, टोल्बिटामाइड इज एंटी डायबिटिक ड्रग, देन वारफेरिन। याद रखना है आपको, अल्बुमिन को कौन बाइंड करता है? तो अल्बुमिन एज इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर मोस्टली एसिडिक ड्रग। एसिडिक
acid type of drug will bind to the albumin. So example of drug binding to the albumin, so warfarin, tolbutamide, tetrasulfonamides, penicillins, phenytoin वगैरह, benzodiazepine, barbiturates, valproic acid. So these are the drug which are known as a acidic drug. ये सब क्या है? Acidic drug है. They are the acid in nature. ये सब क्या है? Acidic drug है. So acidic drug will bind to the albumin. So these are the example: barbiturate, benzodiazepine, NSAIDs, valproic acid, phenytoin, penicillamine, penicillin, sulfa drugs, tetras. है ना? Now what type of drug binds to the acid? है ना? What type of drug binds to the alpha 1 acid glycoprotein? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को बेसिक ड्रग बाइंड करते हैं यहाँ पे, है ना? यहाँ पे बेसिक ड्रग बाइंड करेंगे. बेसिक ड्रग विल बाइंड टू द एसिड 1 ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, तो बेसिक ड्रग कौन से है भाई? याद रखना है, बीटा ब्लॉकर्स, बीपीवैकेन, लिडोकेन, मतलब ये लोकल एनेस्थेटिक. बीटा ब्लॉकर्स लोकल एनेस्थेटिक्स, डिसोपायरामाइड, इमिप्रामाइन, मिथाडोन. जो बेसिक ड्रग है ना, प्राजोसिन, क्विनिडीन, वेरापामिल, बेसिक ड्रग है ना, जिसका नेचर का है बेसिक है. सो बेसिक टाइप ऑफ ड्रग विल बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. एसिडिक टाइप ऑफ ड्रग विल बाइंड टू द albumin. Not important है. Now different है ना. Now albumin is a है ना, albumin different drug binding site on albumin. So most of the 99% drug binds to the albumin. आपको ये याद रखना है, 99% drug binds to the albumin. 99% drug binds to the 99% drug binds to the albumin, but albumin has a different binding sites. तो albumin के ऊपर different binding sites है. तो albumin क्या है भाई? Albumin is a protein. It is a plasma protein. It is the most abundant plasma protein. Albumin is the most abundant plasma protein. Most of the drug binds to albumin, so that is a 99% drug binds to albumin. Now all these drug will not bind at a one site. So albumin has a different binding site. मतलब albumin is a protein. Albumin क्या है? Protein है. Albumin is a protein and it is a polymer of amino acid. So albumin is a protein. Albumin क्या है भाई? Albumin is a protein. So protein is nothing but the polymer of amino acid. तो protein का polymer है ना, protein is a polymer of amino acid. तो amino acid का polymer है. So some drug will bind to a particular sequence of amino acid. Drug will bind to a particular sequence of amino acid, and that is known as a binding site. It is known as a binding site. तो बाइंडिंग साइट्स ऑन albumin. तो देखो फर्स्ट होता है साइट 1. साइट 1 so it is a particular amino acid sequence where drugs will bind to the albumin. तो पहला होता है आपका साइट 1. तो साइट 1 क्या है? साइट 1 is known as a warfarin binding site. याद रखना है आपको, warfarin binding site and also known as a azapropazone binding site. Site 1 is known as a warfarin binding site or also known as a azapropazone binding site. So most of the drug will bind to albumin, but at a different site. Site 1 is known as a warfarin binding site, also known as azapropazone binding site, and यहाँ पे बहुत सारे ड्रग बाइंड करते हैं. So it represents the region where number of drugs binds. तो जैसे यहाँ पे several NSAID, lot of NSAIDs जैसे phenylbutazone वगैरह, NSAIDs bounds like phenylbutazone, naproxone, indomethacin. Then all sulfur drugs, sulfonamides will bind. Then phenytoin, sodium valproate and bilirubin. So it is also bilirubin binding site. तो यहाँ पे साइट 1 जो है उसको बोलते हैं वारफेरिन बाइंडिंग साइट और azapropazone बाइंडिंग साइट. यहाँ पे बहुत सारे ड्रग बाइंड करेंगे जैसे NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लाइक phenylbutazone, naproxone, indomethacin. All sulfonamides will bind to this side. है ना, sulfadoxine, sulfamethoxydoxine, है ना, sulfadimethoxine, sulfamethoxazole, sulfamethoxazole, then phenytoin, sodium valproate. All type of drug
including bilirubin. So they will bind to site 1. Site 1 clear. Site 2 देखो क्या है. Site 2 is known as a diazepam binding site. Very important. Site 2 is known as a diazepam binding site. And along this side, ये side के भी ऊपर बाकी ड्रग को से. Site 2 is known as a diazepam binding site, and at this side ketoprofen, ibuprofen, tryptophan, cloxacillin, propenicid, medium chain fatty acids ये भी बाइंड करेंगे. So at a site second is known as a diazepam binding site, and at this side also different drug bind like ketoprofen, ketoprofen, ibuprofen, tryptophan, cloxacillin, propenicid, मीडियम चेन फैटी एसिड ये भी बाइंड करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है. साइट 1 इज नोन एज अ वारफेरिन बाइंडिंग साइट और एजाप्रोपेसोन बाइंडिंग साइट. साइट 2 इज नोन एज डायज़ेपाम बाइंडिंग साइट. साइट सेकंड इज नोन एज अ डायज़ेपाम बाइंडिंग साइट. याद रखना है आपको. साइट 3 क्या है अपन देख लें. साइट 3 is known as a digoxin binding site. याद रखना है. साइट 3 is known as a digoxin binding site. Okay. Site 4 is known as a tamoxifen binding site. Site 4 is known as a tamoxifen binding site. तो ये जो 4 साइट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने जैसे बोला है आपको, है ना. तो रिमेंबर साइट 1 इज नोन एज अ वारफेरिन बाइंडिंग साइट. बार बार ले रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इसके. Site 1 is a warfarin binding site and also known as a azapropazone binding site. Site second is known as a diazepam binding site. Site 3 is known as a digoxin binding site. Site 4 is known as a tamoxifen binding site. Very very important question, बहुत बड़ा चुका है. तो ये हो गया अल्बुमिन. अल्बुमिन क्या है? Most abundant plasma protein. Most of the drug binds to albumin. 99% drug binds to albumin. Acidic type of drug binds to albumin. ठीक है, खतरनाक. चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग साइट फॉर ग्लोबुलिन्स. बाइंडिंग साइट्स ऑन ग्लोबुलिन्स. तो अल्बुमिन तो हो गया अभी. अल्बुमिन के बाद में आता है आपका ग्लोबुलिन. तो व्हाट आर द डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स ऑन अ ग्लोबुलिन? व्हाट आर द डिफरेंट बाइंडिंग साइट ऑन अ ग्लोबुलिन? पहला देखो, पहला है आपका अल्फा ग्लोबुलिन. पहला है अल्फा 1 ग्लोबुलिन. Alpha 1 globulin is also known as a transcoating. Alpha 1 globulin is also known as a transcoating or corticosteroid binding site. इसका सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So alpha globulin is also known as transcoating और alpha 1 globulin is also known as a transcoating. Alpha 1 globulin is also known as a transcoating. क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. क्यों बोलते हैं इसको ट्रांसकोटिन? Because most of the corticosteroid drugs like your prednisolone, triamcinolone, dexamethasone, betamethasone, all these drugs after absorption binds to the alpha 1 globulin. That's why alpha 1 globulin is also known as a transcoating. Okay. नेक्स्ट आता है आपका अल्फा 2 ग्लोबुलिन. अल्फा 1 ग्लोबुलिन को ट्रांसकोटिन बोलते हैं. अल्फा 2 ग्लोबुलिन को बोलते हैं अपन सेरुलोप्लाज्म. Alpha 1 globulin transcoating. Alpha 2 globulin is known as ceruloplasmin. Alpha 2 globulin ceruloplasmin, and alpha 2 globulin is known as ceruloplasmin, and it is a binding site for lipid soluble vitamins like A, D, E, K and cupric ion. So cupric ion binds to the alpha 2 globulin, that's why it is known as ceruloplasmin. It is a binding site for cupric ion, that's why known as ceruloplasmin. Also, it is a carotenoid binding site. Vitamin A, D, E, K will also bind to the alpha 2 globulin. चलो नेक्स्ट आता है आपका beta 1 globulin. Beta 1 globulin is also known as a transferrin. Beta 1 globulin is also known as a transferrin because it is a binding site for ferrous ion. तो फेरस आयन एब्सॉर्प्शन के बाद में बीटा 1 ग्लोबुलिन को बाइंड करेंगे, एंड दैट्स व्हाई बीटा 1 ग्लोबुलिन इज नोन एज द ट्रांसफेरिन. याद रखना है. अल्फा 1 ग्लोबुलिन ट्रांसकोटिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन सेरुलोप्लाज्मिन, अल्फा
है ना, अल्फा 2 ग्लोबुलिन सेरुलोप्लाज्मिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन ट्रांसपेरेंट। तो बीटा 2 देखो, बीटा 2 ग्लोबुलिन इज नोन एज अ बाइंडिंग साइट फॉर कैरोटिनॉइड्स, बीटा 2 ग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गामा ग्लोबुलिन्स, इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन गामा ग्लोबुलिन्स को बाइंड करेगा। गामा ग्लोबुलिन्स मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है, गामा ग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडी। दोस्तों यहाँ पे देखो ग्लोबुलिन के बाइंडिंग साइट्स। तो ग्लोबुलिन इज अ अल्फा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का टाइप होता है अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। तो globulins are also second abundant protein. So first most abundant protein कौन होता है, अल्बुमिन। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के टाइप होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा का टाइप होता है अल्फा 1, अल्फा 2। तो अल्फा 1 ग्लोबुलिन इज आल्सो नोन एज ट्रांसकोटिन बिकॉज इट इज अ corticosteroid binding site. Alpha 2 globulin is known as ceruloplasmin because it binds to the cupric ion. Cupric ion will bind to the alpha 2 globulin and also vitamins will bind. Then beta 1 globulin is known as a transferrin. तो ये जो known as जो है ना, known as, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इन डिफरेंट मैनर। अल्फा 2 ग्लोबुलिन known as a ceruloplasmin, beta 1 globulin transferrin, beta 2 globulin corticosteroid binding site, carotenoid binding site, gamma globulin is a binding site for antigen, है ना। ड्रग्स विल आल्सो बाइंड टू द टिश्यू, ड्रग्स आपके टिश्यू को भी बाइंड करते हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग टू ए एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग टू ए एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू। जैसे सबसे ज्यादा ड्रग किसको बाइंड करेंगे, मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड्स टू द लीवर, एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, देन किडनी, देन आता है आपका लंग्स, एंड देन आता है आपका मसल्स। ये सीक्वेंस भी पूछा है, ये सीक्वेंस पूछा है जीपैट 2021 में। So order of binding of a drug to a tissue, so liver is then liver more than kidney more than lungs more than muscles। तो सबसे ज्यादा ड्रग्स बाइंड करेंगे लीवर को, सबसे ज्यादा ड्रग बाइंड करेंगे लीवर, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म मोस्टली लीवर में होता है। देन आता है किडनी, देन आता है लंग्स, देन आता है मसल। सबसे कम ड्रग मसल को बाइंड करेंगे, सबसे ज्यादा ड्रग लीवर को बाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है जीपैट 21 में, सीक्वेंस ऑफ binding of a drug to extravascular tissue, so liver higher than kidney, higher than lungs, higher than muscle। Okay, let's see the next significance of protein binding। ये प्रोटीन बाइंडिंग का इफेक्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग होने के बाद में क्या क्या होगा, है ना। प्रोटीन बाइंडिंग क्या करेगा, protein binding will increase the absorption, protein binding of drug leads to increase the absorption, protein binding of drug leads to increase the absorption। क्यों होता है, to increase the absorption because देखो यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपका ब्लड, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या है, ब्लड है, और बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज अ इंटेस्टाइनल साइट, दिस इज अ ब्लड साइट। अभी देखो जब इंटेस्टाइन से ड्रग एब्सॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, इंटेस्टाइन से ड्रग एब्सॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, और ब्लड में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन से, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। तो व्हेन ड्रग बाइंड्स टू ए प्लाज्मा प्रोटीन, तो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करेगा, तो बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्टिव ड्रग। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड किया ड्रग ने, तो वो ड्रग प्लाज्मा में है ही नहीं, ऐसा कंसिडर होता है, बिकॉज ओनली फ्री ड्रग विल बी कंसिडर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो जब प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड ड्रग होता है तो ब्लड में ड्रग है ही नहीं, ऐसा यार मतलब। so there is no free drug in the blood, so there exists a absorption gradient, वहाँ पे gradient मिलेगा, concentration gradient मिलेगा, that's why absorption will be higher।
So plasma protein binding increases the drug absorption. Plasma protein binding decreases the volume of distribution. Volume of distribution कम होगा. More will be the plasma protein binding, less will be the volume of distribution. तो जैसे वारफेरिन क्या है, वारफेरिन इज 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड. बेंजोडाइजिपिन जैसे डाइजिपम 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड. फ्यूरोसेमाइड डायरेटिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिक्लोक्सिन, ये सब क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे विल हैव लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दे विल हैव लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. So decrease the volume of distribution, then prolongation of drug action. So plasma protein binding increases the duration of action. जैसे अगर ब्लड में ड्रग है, प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड है, तो वो ड्रग विल, ओके. सो ओनली फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. Only free form of drug is available for metabolism. Only free form of drug is available for pharmacological effect. Only free form of drug is available for elimination. जो फ्री ड्रग है, फ्री ड्रग जो है वही अवेलेबल है इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए, इसके लिए एलिमिनेशन के लिए, इसके लिए एक्शन के लिए. ओनली फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग का फ्री फॉर्म जो है वही अवेलेबल, वही आपको है ना. ओनली फ्री ड्रग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओनली फ्री ड्रग विल बी मेटाबोलाइज्ड, ओनली फ्री ड्रग विल बी eliminated, ओनली फ्री ड्रग विल बी, है ना, विल शो द एक्शन, राइट. तो प्रोटीन बाउंड ड्रग क्या है, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देन एज प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग इज देयर, so it will not show the action, it will slowly release the from proteins and slowly dissociation हो जाएगा उसका, slowly release हो जाएगा, slow action दिखाएगा. That's why it will increase the duration of action, prolongation of action, decrease the metabolism and elimination. ठीक है. A drug with the volume of distribution low, a drug with the low volume of distribution, they are easily dialyzed, मतलब इनका ब्लड में डायलिसिस कर सकते हैं. तो एक ड्रग है जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, उसका टॉक्सिटी अगर हो गया आपको, तो यू कैन अंडरगो डायलिसिस एंड दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड. क्यों? बिकॉज लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ड्रग कहाँ पे है, ड्रग आपको सभी ब्लड में है. जो भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा उसका मतलब है कि ड्रग कहाँ पे, सभी ड्रग, सब ड्रग क्या है, प्लाज्मा में है, ब्लड में, तो इट कैन इजीली डायलाइज. बट अगर if drug is having high volume of distribution, if drug is having high volume of distribution, that means drug is present in the tissue. ड्रग कहाँ पे है, टिश्यू में. तो डायलिसिस का आप कर रहे हो, आपका डायलिसिस ब्लड का कर रहे हो, तो डायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव इन दिस केस. तो डायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव इन दिस केस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा है आपको. तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू ए ड्रग, और देन आया है आपका डिफरेंट देखो कंपैरिजन बिटवीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग. तो दोनों में कंपैरिजन क्या है. ओके, सो फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग. सो बाइंडिंग of plasma protein involves weak bonds, thus it is a reversible, है ना. प्लाज्मा ड्रग है ना, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज अ रिवर्सिबल, बट टिश्यू बाइंडिंग इज अ irreversible. Okay, binding of drug to a tissue involves a strong covalent bond and that's why it is a irreversible, है ना. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रिवर्सिबल होता है मोस्टली, टिश्यू बाइंडिंग irreversible होता है. Drug that binds to plasma protein will have a less volume of apparent volume of distribution. जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, जो ड्रग टिश्यू को बाइंड करता है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा.
हाफ लाइफ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग इज शॉर्ट, है ना, शॉर्ट टाइमिंग के लिए प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है ड्रग। हाफ लाइफ ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू बाइंडिंग इज हाई, क्योंकि टिश्यू को बाइंड करता है तो उसका हाफ लाइफ भी ज्यादा होता है, तो जल्दी रिलीज नहीं होता। does not result in the toxicity. Plasma protein binding does not result in the tissue toxicity, but those drug bind the tissue result in the toxicity. Tissue toxicity is common. For example, chloroquine. यहाँ पे example है chloroquine. Chloroquine, then paracetamol. तो ये bind करता है, chloroquine will bind to the retina of your eyes and will cause retinal toxicity. Paracetamol will bind to liver cells and cause liver toxicity. Displacement type of displacement from binding site is possible by other drugs. मतलब मान लीजिए जैसे वारफेरिन है, वारफेरिन है और फिनाइलब्यूटाजोन है, कौन से है, फिनाइलब्यूटाजोन, वारफेरिन एंड फिनाइलब्यूटाजोन। तो वारफेरिन फिनाइलब्यूटाजोन बोथ ड्रग बाइंड्स टू द एल्बुमिन। सपोज वारफेरिन का टैबलेट ले लिया, वारफेरिन एब्सॉर्ब होकर सब प्रोटीन को बाइंड कर लिया, उसके बाद में आपने ये फिनाइलब्यूटाजोन का टैबलेट लिया, so phenylbutazone will also get absorbed, will also bind to the plasma protein, and phenylbutazone and warfarin binds to the same site, but phenylbutazone has a more tissue, more affinity for the plasma proteins. तो phenylbutazone को क्या है, ज्यादा affinity है, ज्यादा प्यार है इससे प्लाज्मा प्रोटीन से, तो वारफेरिन भी जाके बाइंड कर चुका है पहले, तो phenylbutazone जाएगा वहीं पे, कहाँ पे, जहाँ पे वारफेरिन बाइंड किया है वहां पे उसको हकल देगा। So phenylbutazone will displace the warfarin from plasma protein binding site, and that's why there is a high level of warfarin, free warfarin in the blood, which can result in the toxicity. This kind of interaction is known as a displacement type of interaction. So displacement protein binding type of interaction is possible the plasma protein binding of drug, but such kind of interaction is not possible in the tissue binding of drug. Displacement by other drug generally does not occur in the tissue. No, competition between drugs for binding to a plasma protein occurs, so tissue drug binding generally is a non-competitive. So it is a difference between plasma drug binding and tissue drug binding, है ना, तो ये भी याद रखना है आपको, डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, के ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपको, तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म हम लेंगे 7 बजे। टुडे मेटाबॉलिज्म एट विल बी एट 7 PM, 7 to 8 अगेन एक लेक्चर होगा, 7 to 8 PM अगेन एक लेक्चर होगा। सो इन दैट वी आर गोइंग टू सी द ड्रग मेटाबॉलिज्म पार्ट विल बी टेकन इन द इवनिंग, है ना, 7 बजे, है ना, 7 PM ड्रग मेटाबॉलिज्म सी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सबको समझ में आया होगा तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, इफ यू अंडरस्टूड यस राइट, यस में। Everybody understood? One more lecture will be there at 7 PM, drug metabolism.